Hi everyone, welcome to the channel. We'll just have a quick discussion about the Nifty and first we'll discuss कि पहले हमारा narrative क्या था, what we were planning, what we were looking in the market और आज के move के बाद what we can expect in the future. We'll discuss about it. This is a daily time frame chart of Nifty. So previously we were looking that market had given a nice up move and took out this buy side liquidity of 24601, and after taking out this high I was very clear that market is now going to either go into a consolidation or it will take a retracement, then we can look for the higher levels, right? So I'm still bullish in the market and I'm expecting a higher level, which is I guess around 25318 is going to be next. So the first target will be 24800 and 25,000 next and 25,300, and in the coming months we can expect 26,300, the new all-time high, but it's going to take time. It's not coming in a near future, like in a day or two. It will take a time, at least a month or two, and maybe even more than that. But still I'm bullish in the market. So previously I was expecting कि एक पुल बैक आए, रिट्रेसमेंट आए, ये शॉर्ट टर्म लो दिख रहा है. वी हैव दिस शॉर्ट टर्म लो ऑन अ डेली टाइम फ्रेम. सो आई वाज एक्सपेक्टिंग कि प्राइस यहाँ पे एक हम लोगों को ब्रेक डाउन दे या मार्केट सस्टेन करे, कंसोलिडेट करे, देन ऑन अ पुल बैक वी कैन लुक फॉर सेल ऑन राइज into this imbalance and this order block, right? So we were expecting some this kind of move, and then from here we could have looked for the long, right? But as we can see यहाँ पे after taking out this low we just went with a sharp decline into this. So I was expecting कि 24224 भी अगर आ जाता. Why I'm looking at 24224? There are 2-3 reasons. First, we have a relatively equal low and a sell side liquidity over here on a lower time frame. Along with that, from this low to this high we have a equilibrium around 24,190, which is around 24,200, and also it aligns with the opening price of this order block you see over here. So this is a very good zone or a area from where we can look for a buying opportunity in the market. So I was expecting कि प्राइस एक बार इसके नीचे सस्टेन करके सेल ऑन राइज करते हुए वी कैन लुक फॉर दिस टेम्पररी शॉर्ट साइड ट्रेड up till here 24,200, 24,190, and then after below this 24,190 we could have looked for a long as we were trading into this imbalance and this order block. But now we have seen a nice down move and a sharp reversal or a rejection from the lower level, and closing came above this. So again we are into uncertainty. We can't say that market will go on a lower side because we have already seen a nice buying from downside, and also we can't just say that the market will move on a higher side continuously from here because we have a fair value gap on a daily time frame. Now things are going to be little complicated over here, so we'll just go on a lower time frame to understand how we can look in the market. But at this point अगर daily time frame पे ये fair value gap breach होता है, we get a closing above this, and if we are using this as an inversion we can look for long for all these level 24,620, 630, next 24,677, and this high which is around 24,774, which is also near to 24,824, the target. So we can look for these level once we are trading above this fair value gap and using this as an inversion. We can say that ये जो जितना भी down moving था, it will act as a bullish order block, and we'll use this in a future for the higher side trade, right? जब तक प्राइस इसके नीचे है, अगेन एज आई सेड कि मार्केट में अच्छा सा एक रिजेक्शन आया फ्रॉम अ लोअर लेवल्स एंड विच वी वर एक्सपेक्टिंग कि प्राइस एटलीस्ट ये इम्बैलेंस में ट्रेड करे, बट स्टिल इट डिडंट टैप दिस ऑर्डर ब्लॉक एंड इवन इट डिडंट ट्रेडेड बिलो दिस इक्विलिब्रियम. वी आर स्टिल इनटू अ प्रीमियम zone. But again we have taken out these low, all this low which has been taken out over here, and we are traded into this imbalances, all this gap. So इसकी वजह से थोड़ा सा complexity बढ़ जाएगा for us to trade. So on a lower time frame if we just go, so on a 15-minute time frame we have this daily time frame fair value gap. Along with that we have a liquidity over here. So this is your buy stops,
and we have a sell stops over here. Now the major thing is market is still very uncertain at this point. यहाँ पे हम लोग लॉन्ग या शॉर्ट नहीं प्लान कर सकते जब तक मार्केट इस फेयर वैल्यू गैप के ऊपर ट्रेड नहीं करता। बायस हमारा क्लियर नहीं होएगा, इसके ऊपर रहेगा तो वी कैन लुक फॉर बुलिश बायस। मार्केट इसके नीचे है, वी कैन कंटिन्यू ऑन अ डाउन साइड ऑल्सो, वी कैन कंटिन्यू ऑन अ हायर साइड ऑल्सो, देयर विल बी अनसर्टिनिटी। सो ये पूरा जो रेंज है, विद इन दिस रेंज विल लुक फॉर दी इंट्राडे लिक्विडिटीज़। नाउ द इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज़, अगर हम लोग बड़ा गैप डाउन खुलते हैं समवेयर अराउंड हियर, देन ऑन अ पुल बैक आई विल लुक फॉर शॉर्ट। कहाँ तक के लिए? बिलो दिस इक्विलिब्रियम वी हैव अ OT जोन अराउंड 24,000, राइट, दिस इज़ योर OT। तो यहाँ तक का हम लोग शॉर्ट कर सकते हैं, यहाँ तक का हम लोग को देखने मिल सकता है मार्केट अगर बड़ा गैप डाउन ओपन हो रहा है। छोटा मोटा गैप डाउन अगर हो रहा है समवेयर अराउंड द कॉन्सिक्वेंट इंक्रोचमेंट ऑफ दिस वीक विच ऑल्सो अलाइन विद दिस ऑर्डर ब्लॉक जोन, सो इसको रिक्लेम करके वी कैन लुक फॉर लॉन्ग। कहाँ तक के लिए? दिस बाय साइड लिक्विडिटी, राइट। फ्लैट ओपन होके अगर हम लोग ऊपर जा रहे हैं, डोंट रश टू गो लॉन्ग इन द मार्केट, बिकॉज यहाँ की लिक्विडिटी लेके मार्केट रिवर्स हो सकता है। तो इन दैट केस आई विल वेट एंड आई विल शॉर्ट द मार्केट फ्रॉम हियर ओनली ऑन द कन्फर्मेशन। अगर फ्लैट ओपन होकर हम लोग नीचे जा रहे हैं, अगेन दिस इज़ द जोन जहाँ से आई लुक फॉर लॉन्ग, यहाँ से हम लोग लॉन्ग की एंट्री प्लान कर सकते हैं। सो फ्लैट ओपन होकर नीचे जा रहा है अराउंड दिस जोन विल लुक फॉर लॉन्ग। अगर फ्लैट ओपन होकर ऊपर जा रहा है, ये लिक्विडिटी के यहाँ से हम लोग शॉर्ट करेंगे, राइट। बड़ा गैप डाउन ओपन हो रहा है, देन ऑन अ रिट्रेसमेंट विल गो शॉर्ट द मार्केट फॉर 24,200 एंड 24,000। अगर बड़ा गैप अप खुल रहा है इसके ऊपर, देन विल वेट। अगर मार्केट इसके ऊपर सस्टेन करता है, देन विल यूज़ दिस फेयर वैल्यू गैप एज अ इन्वर्जन टू गो लॉन्ग। अगर मार्केट सस्टेन नहीं करता है, प्राइस गैप अप खुल के अगर नीचे आता है, तो ये कंसोलिडेशन के साथ ये जो हमारा डे क्लोज है, राइट, प्रीवियस डे का, यहाँ से ये जोन से अगर कोई रिवर्सल अगर मिलता है तो यहाँ से फिर लॉन्ग करेंगे। सो दीज आर दी फ्यू पॉसिबिलिटीज़ इन द मार्केट जो मैं कल एक्सप्लोर करूँगा। इसके अलावा अगर कुछ और होता है, देन डेफिनेटली विल वेट एंड एनालाइज कि कोई फ्रेश लिक्विडिटी बिल्ड हो रही है नहीं हो रही है। On a higher side, the target are very clear. We have this 24,500, this one, and the next is 24,620, 630 liquidity. Above that, we have these equal high 24,677, and if it sustains, then even we can achieve 24,824 on a higher side. So these are going to be target on a higher side. As I said, on a higher time frame, we are still in the bullish market. This is going to be a counter trade on a short side if we are sustaining on a lower level, or again we'll look for long around 24,000 and so. So this is it for Nifty, and if you like the video, please do like, share and comment, and if you are new, don't forget to subscribe to my channel. Till see you in the next lecture. Till then, stay safe, be happy. Thank you.